रिजल्ट ये जो आपने स्क्रीन में दिखाया है माइनस एम सी Um, एक्स स्क्वायर no, no. बाय Pressure due to gas in the cylinder. How much pressure it applies? What was the final derivation? ये किया था हम लोगों ने, अच्छा यहाँ से डेरिवेशन किया था. कितना आया टू था? बाय सी टू सी स्क्वायर ये फिर से बोलिए. Pressure is equal to. प्रेशर 1/3 रो सी स्क्वायर Okay. C mean square. Mean velocity. सी Mean मीन्स square velocity. Mean square velocity. This यस was सर the this was the end result we got. इससे पहले यहाँ पे था ये. Pressure of the gas is um, this much. ठीक है. तो from this we concluded or we derived in fact is that ki pressure, I mean energy, which energy, only mean kinetic energy of gas molecule is 3 by 2 kBT, which is only temperature dependent. These first two are constant, only temperature dependent, nothing else, not the nature of the molecules or atom. In one cylinder, you take 10 types of the gases, all will have same mean kinetic energy. All the molecules of all the gas will have same equal kinetic energy, which will be 3 by 2 kBT. What will be its unit? इसका यूनिट क्या होगा? सर केबी आपने केबीटी 3/2 तो 3/2 केबी तो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का तो केल्विन रहेगा जूल्स नहीं है All type of energy will have the unit joule. कोई भी एनर्जी हो, यूनिट विल बी जूल. कांस्टेंट का यूनिट होता है ना, ऐसा किसने बोला कि कांस्टेंट का यूनिट नहीं लेंगे? सम कांस्टेंट हैव द यूनिट, सम डजंट हैव. जैसे रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू R इज द कांस्टेंट, यूनिट होता है उसका. यस. यस some सर are- some some constants are unitless, dimensionless, but some have units and dimensions. तो यहाँ पर है यूनिट इसका. इसका मतलब what will be the unit of Boltzmann constant then? जूल्स Joules per Kelvin or temperature का Kelvin, K will get cancel, Joule will remain. इसका joules per Kelvin आएगा, ना temperature का Kelvin आएगा, K will go, Joule will remain, है ना? यस सर Alright. यस सर So this was the interesting fact, in fact, कि only temperature dependent, not the nature of the gas. यस In सर one cylinder, जैसे हमने discuss किया था, in classroom or in room, all the gas particles will have equal mean kinetic energy, but total energy of all the gas will be different. Cylinder में suppose दो gases हैं, तो उनकी उनकी जो individual total energy will be different because that depends upon the n number of particles. जैसे classroom में या room में number of particles will be different. Oxygen will be different, nitrogen will be different, CO2 will be different. So total energy of each gas will be different, and total energy of gas can be total energy of gas in the container or room can be found out. जितने suppose oxygen के particles हैं, temperature तो easily measurable. Particles के number जो है वो थोड़ा मुश्किल है. यस Total सर जैसे मैंने I told you in the beginning of the class कि total रूम में कितने टोटल गैस पार्टिकल्स है वो तो निकाल सकते हैं, बट इंडिविजुअल निकालना मुश्किल है ना. टोटल कैसे क्या क्या फार्मूला लगाया था हम लोगों ने? पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, है ना. ये फार्मूला बना था यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का. देखो नहीं आ गया है वो, आ गया यहाँ पे बनता है वो. इट इज हियर, ये उसी आइडियल गैस इक्वेशन से बनाते हैं, है ना. यस सर प्रेशर टोटल पता है, वॉल्यूम पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर. तो टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स आ जाएंगे रूम में कितने. इंडिविजुअल कितने कितने है वो थोड़ा वो मुश्किल है. दैट इज
different point, but total निकालना easy होता है. That will be mix up the gases, whatever numbers are there, है ना? Yes, sir. So up to here we did. Now alternative equation of state of an ideal gas. Ideal gas equation जो है उसका alternative और different form देखते हैं. We are seeing PV is equal to nRT equation पढ़ी हम लोगों ने. Now if we replace nR, उन्होंने कैसे किया? Other experiment से फिर देखा गया nR is equal to n into kb, and it was found that nR is equal to n into kb. nR को हटा के यहाँ से n into kb. बोर्डमैन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नहीं, these things will be equal to this much. अच्छा. ठीक है. हाँ सर. तो फॉर 1 मोल उसको और आगे देखते हैं. अगर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? n will be equal to na. हाँ. Is it okay? If n is 1 in the any cylinder, number of particles कितने होंगे उसमें? Have you got a number? हाँ. अगर मैं if you say इस सिलेंडर में in this particular gas cylinder, है ना, number of moles are 1 only. 1 moles gas particle है ना? तो how then you are asked how many total particles? So 1 mole will contain Avogadro's number. है ना? जैसे 1 dozen of any objects is 12. वैसे ही 1 mole is Avogadro's number. Are you getting? Yes, sir. n1 कर दिया तो n will be equal to na. तो therefore r will be equal to, अभी देखो यहाँ पे n ये 1 हो गया तो बचा क्या r, n क्या हो गया na into kb. That's what I was telling you yesterday. Yes, na sir. into kb is equal to r. na is equal r is equal to na into kb. तो kb will be Cancelled. Boltzmann constant will be r upon na. Boltzmann constant, तो ये Boltzmann constant की वैल्यू निकाल सकते हैं r upon na. ठीक है. Therefore r is equal to na into kb, which gives us kb is equal to r by na. तो r कितना है? 8.3. यूनिट इसकी यूनिट कितनी है? जूल्स पर केल्विन पर मोल डिवाइड बाय na. na is 6.02 into 10 raised to power 23 per mole. This will go to 1.38 into 10 raised to power, न्यूमरेटर में जाके this will go to numerator, become minus, very low value. Yeah. Joules per Kelvin remains. So Boltzmann constant has quite a low value, 1.38 into 10 to the power minus 23 joules per Kelvin. Clear? Yes, sir. So this is the alternate form also. Suppose now you want to find out the number of gas particles in your room, so you can directly use this relation. Now pressure is known, volume can be calculated, and we have to determine kb is also known now. It is constant. It will be given to you, or it will be available with you. T is the temperature. You have to measure temperature and volume of your room, and you will get the number of particles, number of gas particles in the room. Clear? Yes, sir.
we'll solve one problem. ये वाला problem देखते हैं. Nitrogen gas is sealed in container at temperature this much and pressure this much. Calculate the mean square speed of the molecules. बोलो. Which formula? How to get this? एक second, sir. Nitrogen gas is sealed in container at temperature 320 Kelvin. प्रेशर है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला लगा सकते क्या? Pressure is equals to 1/3 rho by what was that? C mean square. Am I right? Mean square velocity. Yes. C mean square velocity we call it. Okay, mean square velocity. So pressure दिया है. Calculate the means. अच्छा, C mean square ही calculate करना, mean square. Mean velocity square. तो ठीक है ना सर? तो 1.1 into 10 to the power 5 is equals to, अच्छा temperature दिया है. अच्छा. सर टेम्परेचर के लिए भी अपने को एक यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि रो फाइंड आउट करना है. रो तो दिया ही नहीं है, रो फाइंड आउट करना पड़ेगा. टेम्परेचर गिवन. हाँ, रो डेंसिटी जो है, देखो सॉरी ये जस्ट थोड़ा. हाँ, एक मिनट जस्ट. इट वाज नॉट विजिबल. अभी दिख रहा है पूरा? कैन यू सी द फुल क्वेश्चन नाउ? हाँ. दिख रहा है पूरा आखिर तक. गो थ्रू. अच्छा ठीक है. कैलकुलेट द टेम्परेचर at which mean square speed of the molecule reduces to 50% in air. Okay. Mean density of nitrogen gas over the temperature considered is 1.2 kg plus meter per cube. अच्छा डेंसिटी दिया है. ओके. अच्छा तो डेंसिटी से तो फिर निकल जाएगा रो. ओके. Density is mass of How much is the answer coming? एक सेकेंड सर. सो वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, डेंसिटी और रो निकालने वाला. डेंसिटी के साथ ही है ना वो तो. प्रेशर इज हाउ मच. फॉर्मूला क्या है बोलो? Pressure equals to 1/3 rho by what was that? Mean squares. तो it is given, rho is given, तो c square, c mean square velocity निकालना है. तो two things are required. Both are given. नहीं, रो नहीं दिया है ना. नीचे दिया नहीं. ये क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट ये होता है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. तो इतना केजी पर मीटर क्यूब लिखा है ना. डेंसिटी मीन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन. तो रो है ना. देयर इज अ रो ओनली ना. रो ओनली, nothing else. Both the things are given and then तो it is easy. Calculation part you have to do, and you have to write the SI unit also. Yeah.
So it will become What is 3.0 to the power 5 divided by 1.2. Just a second, sir. okay? It's coming 2, 4, 6, 2, 2, 4, 5. 2.5 into 10 to the power 5. Okay, what is the unit? SI unit? SI unit. SI unit. Uh, Rho. I'm not getting it, sir. Speed की unit क्या होती है? What is the unit of speed? It's a meter per second. But mean is it is not the speed, but it is the mean square speed. है ना? Meter square per second square. ऐसा. Okay, square है ना, तो square हो जाएगा. Yeah. So it is answer is 2.53 into 10 power 5 meter square per second square. Notice the unit here. है ना? Unit is not meter per second because it is squared one. ठीक है? आया था ये? Got it this? Yes, sir. Okay, second part देखेंगे इसके. वो तो बस वो तो 50% है. Calculate the Calculate temperature at which mean square speed of the molecules reduces to 50% of that in one. क्या करना पड़ेगा इसमें? पहले तो उसको reduce कर देना पड़ेगा, उसके बाद temperature find करने के लिए बोला है. तो सर ये तो डायरेक्टली वो रहता है ना, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है ना. हाँ, तो क्या था? टेम्परेचर पे रहेगा. हाफ अब MC मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना आया था ये? 3/2 kBT. तो C स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हाँ, तो वो हाफ हुआ तो ये भी हाफ हो जाएगा. यस. तो कितना होगा? 100 160. हाँ. 160. ठीक है. This was direct, but we have to remember the formula. Otherwise, we can mix up the things. Second वाले का भी formula से हमें पता होना चाहिए which formula relates both of them. All right. So this question is good question, Yes, sir. but it was more or less direct question then. Yeah. Now this graph we are going to see. If suppose if I tell you, अगर मैं आपको बोलूं draw a graph between PV by RT versus pressure for ideal gas. Can you try this graph? PV upon RT and pressure for ideal gas. PV by RT. Surface pressure for ideal gas. PV pressure for ideal gases. सर कुछ पार्ट तो कट जाएगा इक्वेट करते करते. यहाँ पर P लेना है और यहाँ पे PV by अपॉन RT RT. लेना है.
वैसे पीवी बाई आरटी होता क्या एक्चुअली? PV by RT. This is equal to n. Since PV is equal to nRT, PV by RT हाँ will be n only. So number of moles yeah. pressure पे how the when we increase the pressure, number of moles कैसे change होगी? What will be the effect on number of moles if it is in the sealed cylinder? They are increasing, decreasing, no change, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, आखिर अपन कंप्रेस करेंगे, आखिर मतलब एक जैसे समझ लो अगर एक सिलेंडर में जैसे आपने बोला तो सिलेंडर में आखिर अपन प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स Yes. तो वो तो चेंज नहीं होंगे। तो कैसा होगा ग्राफ? What kind of graph will be there? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का हो जाएगा, मतलब नहीं प्रेशर बढ़ नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे, प्रेशर कम हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे, मतलब हाँ, प्रेशर बढ़ने से इट शुड नॉट चेंज, है ना, सडन कांस्टेंट वो वैल्यू क्या? लाइक दिस, अच्छा ऐसे हाँ। आएगा कांस्टेंट। इनिशियली इनिशियली जो है प्रेशर बढ़ने के बाद भी वो उतना ही रहेगा ना, नंबर ऑफ सपोज से सडन मोल्स, some 3 moles are there, 2 moles are there. If they are going to remain 2 moles, you keep on increasing the pressure, it is not going to increase or not going to decrease. Yes, यस it is सर। a line will be parallel to pressure axis. It means if you change the pressure, this value is not going to change. All right. यस So सर। this is supposed to be the graph for ideal gas, but real gases, they don't follow the real gases are those gases which don't follow the this gas law, practically जो है ये gases इसको नहीं follow करती हैं, because there is some intermolecular forces are there, and there is some finite volume occupation. They occupy some volume, and pressure also is not that whatever is in means pressure जो है वो भी उसमें change होता है थोड़ा सा, because of their intermolecular forces, very small, but some value is there, so they don't follow the ideal gas equation. तो ideal gas की equation तो ऐसी आनी चाहिए, देखा देखो, this is for ideal gas, but it was found कि जो रियल गैसेस होती है जिनमें थोड़ा प्रैक्टिकली जो है सम मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयर, उनका एक्सपेरिमेंट किया गया एट टेम्परेचर 200 केल्विन पर, ग्राफ केम लाइक दिस, फिर 500 केल्विन पर ऐसा, 1000 पर इट इज क्लोज टू दिस आइडियल गैस. तो व्हाट पॉइंट वाज कंक्लूडेड, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिक्रीज द प्रेशर, देखो यहाँ पर देखो प्रेशर कम है, in this much pressure range almost it is obeying, it is just following the ideal gas path है ना, ऐसा. और बाद में जब प्रेशर बढ़ गया, pressure has gone very high up to say this much pressure, up to say nearly 200, नहीं, nearly 100 atmospheric pressure, it's no problem at high temperature, both the graphs are coinciding. But when the pressure goes up, it is separating now. But more the temperature, more near to the ideal gas it will have. So what conclusion was drawn? इसमें conclusion क्या निकाला गया कि real gases will behave as ideal gases
at high temperature and low pressure, since their density will be less. Their density will be less. And intermolecular action will be, density कम है, दूर दूर रहेंगे, intermolecular forces will be negligible. Yeah. And intermolecular forces will be negligible. ये पॉइंट नहीं लिखा है आपकी बुक में, लास्ट वाली 2 लाइन में, will be negligible. अच्छा. Only this much is written. यहाँ तक बस. But reason is not written, but this is there. कि उनकी density कम होगी, तो they will be, there are chances they will behave like ideal gas. क्या होता है? If you reverse the thing, if you increase the pressure and decrease the temperature, they will come closer. बहुत अगर तुमने बहुत pressure बढ़ा दिया, pressure बढ़ाना मतलब you are just compressing it, you are bringing very close to, very close. They will start interacting, and ideal gas equation will not follow them. Interaction नहीं होना चाहिए. Ideal gas equation जो है, it is also derived from the pressure equation जो हमने derive किया था, उसमें condition थी. तो it is supposed to be means real gases जो है, they will be behaving as ideal gas under these condition. High ग्राफ से हमने देखा high temperature and low pressure. ठीक है. This can be short question. लिखा है books में, ये इतना point लिखा है. This is not mentioned, so you don't mention this, but for your knowledge you can remember. Yeah. देखो इसमें एक one experiment was done by the scientist. देखो अपनी जो किचन में गैस, किचन की जो गैस आती है LPG, what is the full form of that LPG? Liquefied petroleum gas. Liquefied at very high pressure. They are what is called converting into liquid, and since liquids are incompressible, so they will not follow the Boyle's law and all, है ना? जब वो liquid में convert हो गई, which cannot be compressed, so they will not follow the Boyle's law, है ना? तो let's see what is this. इसका जो studies है, देखो in 63, Irish physician that Thomas Andrews succeeded in plotting the PV curve for carbon dioxide. These curves deviated from Boyle's law. जो हम लोगों ने देखा आइडियल गैस इक्वेशन से डिविएट हो गए थे, बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे. ऐसा कब था बॉयल्स लॉ का? पीवी डिविएट हो गए थे at high pressure and low temperature. Reverse of this, इसका reverse है ना? High temperature, high pressure है, मतलब molecules are coming closer. Low temperature, they are coming further closer. So until this time, it had been believed that certain gases could never be liquefied. तब तक साइंटिस्ट ने सोचा था कि नहीं, वो liquefied नहीं कर, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. Andrews showed that there was a critical temperature. He came up with the very important point. There is a critical temperature above which gas would not be liquefied. Critical temperature से ऊपर अगर है temperature का, कितना भी pressure बढ़ा लो, it will not be converting into liquid. So he came up this point, this very useful point, by increasing, मतलब pressure बढ़ा के उसको liquefy नहीं कर सकते. He demonstrated that carbon dioxide, the critical temperature is approximately 31 degrees Celsius. अगर कार्बन डाइऑक्साइड को तुमने 32 पर रखा, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, it will not be liquefied. You have to bring it below the 31,
30 पे रखेंगे, at certain pressure it will be converted into liquid. So this was very important point which he noticed है ना. सर जब तो अपन कंप्रेस बाकी करते हैं तब भी तो एनर्जी बढ़ती होगी ना? हाँ बढ़ती होगी ना, उसमें कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वी आर सीइंग, इसीलिए तो एनर्जी एनर्जी उसको इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए नॉट ओनली बाय गिविंग द हीट, बाय कंप्रेसिंग आल्सो वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम. वो आपके उसमें नहीं है वर्क डन वगैरह का पॉइंट. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है उसकी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन. तो हम वर्क करेंगे तो उसका, अगर हम बाहर से हीट नहीं दे रहे तो ये इंटरनल उसकी बढ़ जाती है. ऑलराइट. तो यस डिफरेंस बिटवीन ये अभी जो मैंने पॉइंट समझा है वो ये है. दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई टॉट एक्सप्लेन यू ऑल दिस. प्लॉट कैसे किया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना. और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है गैसेस, देन दे डोंट फॉलो द बॉयल्स लॉ बिकॉज लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यू नो दैट. लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, देयरफॉर वी आर एबल टू अप्लाई द ब्रेक्स इन कार. अगर वो कंप्रेस हो जाता है लिक्विड तो ब्रेक नहीं लगते. नॉट ओनली ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार बट एरोप्लेन का जो ऑल द कंट्रोल्स आर विद द हाइड्रोलिक्स, उसमें फ्लूइड रहते हैं. तो दैट मोमेंट that operate the particular system, fluid goes there and operates it. मैकेनिकल लिंकेजेस नहीं रहती. मैकेनिकल लिंकेजेस में क्या रहता है, हार्ड हो जाएगा. जैसे बाइक में क्या है, दे आर स्मॉल, ज्यादा उसमें लिंकेजेस नहीं है, तो डायरेक्ट हम ब्रेक लीवर से या उसका रॉड से लगाते हैं. बट इफ द व्हीकल इज बिगर, कार वगैरह है, ट्रक है, एरोप्लेन्स है, then the mechanical linkages they may they may they may have lot of friction क्योंकि बहुत टर्न होंगे उसमें. तो it will not be that effective, very hard also. तो fluid system रहता है. Fluids are incompressible. Moment we apply the brake, fluid is pumped, fluid is already remains in the system, pipeline में रहता है up to the wheel. But moment you apply the brake, increase of pressure at one point is equally transmitted to all the points immediately. That is what is the Pascal's law in fluid. Or they are incompressible immediately. Action is there without any delay. All right. So, यस but सर. they will not follow the Boyle's law because compress नहीं, Boyle's law में P inversely proportional to V, pressure बढ़ाते हैं तो volume घटता है and vice versa. But moment they convert into the fluid, liquid, Boyle's law will fail. All right. तो देखो ये यस सर. पॉइंट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. आइडियल गैस इज at high temperature and low pressure. Already this point has been discussed. And there are no intermolecular forces between the molecules in between the collision. And जो रियल गैसेस में नहीं होता है, बट आइडियल गैस आइडियल गैसेस में नहीं होता, बट रियल गैसेस में intermolecular forces comes into action. So this point was noticed by the Dutch scientist Van der Waal. Van der Waal ने नोटिस किया था. तो उसने क्या नोटिस किया, शॉर्ट रेंज जब मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं, दे आर वेरी क्लोज, दे रिपेल ईच अदर. they repel each other. Short range repulsion force acts between the gas molecules when they approach each other, thereby reducing the effective distance. Suppose ये molecules comes here and यहाँ से repelling action शुरू हो गया, it will return now. फिर इधर है, suppose यहाँ पर, again it will not reach to it, before that it will return. तो effective distance will be less. उसका जो एक्चुअल में डिस्टेंस है इतना होना चाहिए, बट ड्यू टू रिपेलिंग एक्शन इट इज बाउंसिंग बैक, है ना. तो थोड़ा कम उसका इफेक्टिव लेंथ हो गया. तो दे आर कवरिंग लेसर डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस is reduced
तो देयरफॉर वॉल्यूम जो है, बिकॉज दे आर नॉट कवरिंग फुल डिस्टेंसेस, तो वॉल्यूम V that will also be less. वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम actually reducing the useful gas volume below the value of V that we consider, because they are under the effect of repulsive forces when they come very close. So they cover lesser distance, means they are covering lesser volume between the two collision. तो वॉल्यूम कम हो गया, और उसके बाद वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, वॉल्यूम कम, एंड देन तो उसने वंडरवाल ने क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी को क्या किया, चेंज किया. उसने बोला वॉल्यूम जो है, प्रेशर देखते हैं, तो वॉल्यूम का उसने बोला दे आर कवरिंग स्लाइटली लेस वॉल्यूम, तो वो माइनस कर दिया उसने एनआरटी. और प्रेशर के बारे में क्या बोला, प्रेशर का देखते क्या है, वॉल्यूम कवर्ड इज स्लाइटली लेस बिकॉज ऑफ रिपेलिंग एक्शन. नाउ प्रेशर के बारे में उसने क्या किया, प्रेशर के बारे में क्या बताया. ओके सर आपका शेयरिंग स्क्रीन बंद हो गया. ओके जस्ट मिनट, कितना टाइम बाकी है अभी, खत्म हो गया बस. तो विल रीस्टार्ट. चलो हाँ सर. विल रीस्टार्ट कर लेते हैं, आगे ना भाई.